रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Hi, how are you all the students? I hope you are fine, good, fabulous, enjoy your life. So today again I present a new lesson of English language class, because I didn't take last time in language class because of some problems I had. That's why I didn't take a class. So today again next our step. So today we are learning about tenses. Today we are learning about tenses. What are the tenses? There are how many tenses are there in the English? There are 3 tenses, and each tenses is 4 part. So look at here. Suppose present, we have present tense, past tense and future tense. There are 3. We have 3 eras, and first present, past, future. Present it's mean हाल, past माजी, future मुस्तकबिल. So by the time you have learned these sentences, today we all about tenses. So there are 3 tenses. So present tense, past tense and future tense. And the present tense, there are 4 kinds of tense: present simple tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. Another past tense, past simple tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. And the third, future tense, future simple tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. इसी तरह 3 टेंसेस किस्म होते हैं, उसमें 4 इनके काइंड्स होते हैं. जैसे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस उनको कहते हैं, जिसमें हम प्रेजेंट के हवाले से बात करते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूस, जो जारी हो कुछ चीज़. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो काम हम कर चुके हैं. और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो काम मतलब सुबह से जारी है, फॉर एग्जांपल. इसी तरह पास्ट सिंपल, जब हम माजी की बात आते हैं, उसमें स्टोरी, वी टेलिंग अबाउट स्टोरी, वी टेलिंग अबाउट अदर थिंग्स. एंड फ्यूचर मुस्तकबिल के हवाले से कुछ, कल का दिन मैं आ जाऊंगा, यहाँ जाने वाला रहूँगा, लाइक दिस वी विल लर्न इन नेक्स्ट step. So I hope you have understood what I'm telling about these tenses. So next, and now today we are learning about present indefinite tense. I told you present indefinite tense. We use for present indefinite tense shows, habits, repeated actions, universal truth and daily routine. ये टेंस जाहिर करता है हैबिट, इट्स मीन आदत. रिपीटेड एक्शन, तकरारी आम व काम जो बार बार होते हैं. यूनिवर्सल ट्रुथ, आलमगीर सदाकत, कायनात की चीज़ें लाइक. एंड डेली रूटीन, रोज़मर्रा ज़िंदगी, इट्स मीन सुबह से रात तक हम क्या क्या करते हैं. तो वी आर टेलिंग अबाउट दिस टेंस. इसमें हम उसको जुमले में बताते हैं. Pattern, it's mean we call pattern, we call formula, we call structure. These 3 names in the rule and regulation, how to use in sentences, how to use negative, how to use interrogative, how to use real interrogative sentence. So going on our class, the formula is, pattern is a structure we call, anything you call, subject plus verb, first form of verb plus object. So subject, what is subject? Which is the subject which is about the thing we do something. सब्जेक्ट वो होता है जो काम करने वाला होता है.
I told you before the classes in last time, I told you all the things. Again, I am just explaining. Subject काम करने वाले को कहते हैं. Verb, there are be verb, helping verb, other things. This is verb to show the action of the subject. Verb वो काम करता है जो सब्जेक्ट की हरकतों को बताता है. Suppose go, come, cut, watch, visit, tour, climb, decorate, invoke, provoke, play hooky, play hoodlum. These are called आना जाना पीना सोना रोना. The last come noon alif na, it's mean verb. आना जाना पीना सोना इसमें verb. First form we use when present definite first form. There are fourth form, but here you use first form plus object. Object which is our sentence is complete, our work is complete. So the subject is I, you, they, we, he, she, it, anyone, name. And here's some rule and regulation how to use our sentences. Like, so I, you, they, we. This is first. If you want to change a negative sentence, we use don't. These are called auxiliary verb. Auxiliary verb. Do, not, and does not. With the do and does here we use for auxiliary verb. Do also use the verb do mane karna, but here is auxiliary verb. So I don't, you don't, they don't, we don't, like this. He doesn't, she doesn't, it doesn't, anyone, name, Ali, maybe, Saima, maybe, Kulsum, maybe, Kashif, maybe. So anyone name like this. So he doesn't. Yeah, remember some not. If you want to use entire person singular and negative, interrogative, and I.W., don't use in with verb as just affirmative, not negative, not interrogative, not I.W. question. Just note it in your mind when we use third person singular, when we use in verbs. Suppose next slide we will be show how to use in sentences. So he, she, it, anyone name, then we use and put with verb s, es and s. Just third person singular, not second person plural and first person singular. So this is not it, and your mind and your diary will be next. And affirmative sentences. Suppose I have written some sentence easily to understand something. Good children obey their parents. Good children obey their parents. It's mean अच्छे बच्चे अपने वालिदैन का कहना मानते हैं. The second is we watch TV at night. We watch TV at night. हम रात को टीवी देखते हैं. My brother studies at college. Here is something studies because the third person is, I told you before, and sentence my brother studies. तो यहाँ पर हमने s का यूज़ किया क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर. my brother, मैं नहीं, my brother. अगर मैं होता मैं I study, just I write study. तो here is note it. My brother studies at college. मेरा भाई कॉलेज में पढ़ता है. Her friend stitches her own clothes. Here also use es because of the third person. Her friend stitches her own clothes. इसकी सहेली अपने कपड़े खुद सीती है. इसकी सहेली अपने कपड़े खुद सीती है. They come to our home every Sunday. They come to our home every Sunday. वो हर इतवार को हमारे घर आते हैं. वो हर इतवार को हमारे घर आते हैं. My father works in the office. Again come as because of the third person singular. I told you my father works in the office. मेरे अब्बू ऑफिस में काम करते हैं. I think something is here is I haven't written I think this Urdu, so it doesn't matter. तो my father works in the office. इसमें मेरे अब्बू ऑफिस में काम करते हैं. Her sister cooks food. इसकी बहन खाना पकाती है. Our mother does all housework. हमारी अम्मी घर का सारा काम करती है. I play cricket every Sunday. It's mean मैं हर इतवार को क्रिकेट खेलता हूँ. We take exercise in the morning. हम सुबह को वर्जिश करते हैं. So
So these are affirmative sentences, which is about present simple tense. And this is sentence. There are 10 sentences, and you are I give you assignment, and you write in diary in your own wording sentences. I haven't written here some easily sentences because of we have know about the easily, and now we learn and something different. क्योंकि हम आसान जैसे मैं कह सकता था आई गो टू स्कूल, आई डोंट गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल. इट्स आल्सो प्रेजेंट सिंपल बट इट्स अ सिंपल. He studies English. He doesn't study English. Does he study English? He cuts an apple. He doesn't cut an apple. Does he cut an apple? So this is easily used and different. Used in our daily routine sentences, which is about when we meet with friend, with teachers, with close friend, we speak something in front of people. We use these dialogues in front, like we watch TV at night. And I.W.Q question also come in next slide. So I hope you are understanding these affirmative sentences easily to way to learn these. So next, this is affirmative, all 10 sentence, and you will be write in your own sentences, your register mind. Next, and negative sentences. Now that is affirmative, and this one negative sentence. Inkariya jumla. The pattern is subject plus do and do not, yeah, does not. If you want to make a first person second person plural, so do not use, and third person doesn't use. Verb first form plus object. I do not, you do not, they don't, like use, do not be used, do not be used, we don't, he doesn't, he does not be also used. So she does not speak English. Here is remove es because of the auxiliary verb. That's why we can't use in third person singular negative interrogative and I.W. question. So she does not speak English. वो अंग्रेजी नहीं बोलती है. I do not live in Karachi. मैं कराची में नहीं रहता हूँ. He does not waste his time. वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करता है. They do not their homework on time. वो अपना होमवर्क वक्त पर नहीं करते हैं. Okay, they call because of नहीं करते हैं. 44 writing mistakes. So I just like they do not their homework on time. वो अपना होमवर्क वक्त पर नहीं करते हैं. And it doesn't rain here in July. यहाँ जुलाई में बारिश नहीं होती है. It does not rain here in July. And these are negative sentences. So when we use I, you, they, we use do not, and then we use third person singular. We use he, she, it, anyone name, and in negative interrogative we use does not, and without verb with s. Remove the s this time. So here is negative sentence. Next, now simple interrogative sentences, and also called interrogative sentences. It's means सवालिया जुमला इनको कहते हैं. Pattern do, does, subject plus verb first form plus object. So how use? Do you like fish? क्या आप मछली पसंद करते हो? Do you know him या her? क्या आप तुम उसे जानते हो या जानती हो? Does she fear in dark? क्या उसे अंधेरे में डर लगता है? Do your friends play cricket? Do your friends play cricket? क्या आपके दोस्त क्रिकेट खेलते हैं? Do you and he study together? क्या तुम और वो साथ पढ़ते हो? Do you and he study together? क्या तुम और वो साथ पढ़ते हो? So this is simple interrogative sentences, and the first one is affirmative sentences, then negative, then simple interrogative sentences. These are interrogative sentences. So practice these all the
because of we can speak whenever these kind of sentence. Suppose मैं आता हूँ, मैं नहीं आता हूँ, क्या आप आते हो, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, लाइक दिस वी उर्दू में इस तरह हम कहते हैं. सो दीज आर इन सिंपल. नेक्स्ट, रियल इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड I.W. क्वेश्चन आल्सो. वी कॉल I.W. क्वेश्चन जो सवाल करने वाले क्वेश्चन होते हैं, जो व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, इसके ऊपर मैंने लेक्चर दी थी आपके पिछले क्लासों में. सो हेयर पैटर्न इंट्रोगेटिव वर्ड्स I.W. in plus do, does, subject plus verb, first form plus object. We use do with I, we, you, they, and use does with he, she, it, anyone, name. Clearly, I have written all the clear way of the understand easily to understand you. So, what do you have for breakfast? What do you have for breakfast? आप नाश्ते में क्या खाते हैं? This is I.W. question. Where does your friend live? आपका दोस्त कहाँ रहता है? Why does he not work hard? वो मेहनत क्यों नहीं करता है? When do you get up in the morning? आप सुबह को कब उठते हैं? How does your brother drive the car? आपका भाई गाड़ी कैसे चलाता है? So these are real interrogative sentence, means I.W. question है, सवाल करने वाले. जैसे हम सवाल करते हैं what's your name, but here is present simple. तो what time we can say what time do you get up. डेली रूटीन भी आप बता सकते हैं. what do you do then, फिर आप क्या करते हो. what time do you have lunch and dinner, and what time do you drink tea. I drink tea at 6 o'clock evening, like this. We ask like this. What do you do? What do you have for breakfast? आप नाश्ते में क्या खाते हैं? So this is also example, and you practice at home your own self sentences. I use and WhatsApp and Facebook at 9 o'clock. मैं WhatsApp और Facebook रात 9 बजे यूज़ करता हूँ. So we can change this sentence, but the material like this, formula like this, put it first I.W. question, then auxiliary verb, then subject, then another your structure. Rule and regulation like this. Do and does we use for third person singular, he, she, it, anyone, name, and do we use I, you, they. What do you have for breakfast? So these are look at here, in these are example, and write 5. I have written 5 sentences about you understand. I hope you are enjoy this lectures easily. So practice is most important. You practice at home and your cousins you will be make a role play. We will be make a role play. I told you how to role play, like, so I have a one paragraph, but I have not written. I just verbally saying something. Suppose we like this. Well, Mr. Ali, please tell our viewers about an ordinary day in your life. It's mean ordinary माने मामूली ज़िंदगी के बारे में आप अपना ख्यालात मतलब अपने बारे में बताएं. तो आप क्या करते हो? Well, I wake up at 8 o'clock. कहता है मैं 8 बजे उठता हूँ. अच्छा, wake up माने जागना और get up माने उठना. Some different, दोनों वर्ब में डिफरेंट है. wake up जागना, इट्स मीन वो अभी तक बिस्तर में है, सिर्फ उसके आँख खुल गए, तो हम कहें इसमें हम बोलेंगे आई wake up. एंड get up पूरा मतलब बिस्तर से आप उठ गए हैं. सही है. इट्स द डिफरेंट. देयर आर 2 डिफरेंट्स wake up एंड get up में. wake up मतलब अभी तक उठे नहीं हो बिस्तर से, आपने सिर्फ आंखें अपने खोले में या हुआ थोड़ा रेस्ट, मतलब वो उठ गए हैं. तो जब उठ जाएंगे तो गेट अप उनको कहते हैं. तो आई wake up at 8 o'clock. मैं 8 बजे जागता हूँ. रियली डू यू गेट अप देन, कहता आप जब उठते हो उसके बाद क्या करते हो? नो ऑफ कोर्स आई डोंट गेट अप एट दैट टाइम. मैं उस टाइम पे नहीं उठता. आई हैव ब्रेकफास्ट इन बेड. और मैं नाश्ता बिस्तर में ही करता हूँ. ये बिस्तर में ही करते हैं क्योंकि वो जो रिच पीपल आल्सो ईट ब्रेकफास्ट सम
सो वी आर नॉट। एंड आई रीड द न्यूयॉर्क टाइम्स, कहता है मैं, फिर उसके बाद मतलब न्यूयॉर्क अखबार के बारे कहते हैं, जैसे हम यहाँ पर एक्सप्रेस, जंग, दिस काइंड ऑफ उम्मत, न्यूज़पेपर पर्स। व्हाट टाइम डू यू गेट अप? आई गेट अप एट 10, और फिर मैं 10 बजे उठता हूँ। व्हाट डू यू डू देन? फिर उसके बाद क्या करते हो? आई रीड माई लेटर्स एंड डिक्टेट द आंसर्स टू माई सेक्रेटरी, कहता है मैं पढ़ता हूँ खत्तें, फिर उसके बाद डिक्टेट माने उसके इमला करता हूँ, आंसर टू माई सेक्रेटरी को देता हूँ। एंड देन कहता है फिर एट 11 आई टेक अ वॉक विद जिमी, कहता है मैं 11 बजे टेक मतलब चलता हूँ वॉक विद जिमी, जिमी के साथ। जिमी हु इज जिमी, कहता है जिमी कौन है जिमी? जिमी इज माई डॉग, कहता है जिमी मेरा कुत्ता है। वो व्हाट टाइम डू यू हैव लंच? उसके बाद कह रहा है कि आप कितने बजे खाना खाते हैं, मतलब दोपहर का खाना। आई हैव लंच एट 12:30, मैं 12:30 में 12:30 बजे। आई ईट अलोन, मैं अकेले का, अलोन माने अकेला, आई ईट अलोन। हो आई सी, अच्छा। वेल व्हाट डू यू डू आफ्टर लंच? आप लंच के मतलब खाना दोपहर खाने के बाद क्या करते हो? आई रेस्ट अंटिल 6 o'clock, मैं आराम करता हूँ जब तक 6 नहीं बज जाते हैं। एंड एट 6 व्हाट डू यू डू एट 6, मतलब कि और 6 बजे, अच्छा आप क्या करते हो 6 बजे? आई गेट ड्रेस फॉर डिनर, मैं चेंज करता हूँ अपने कपड़े डिनर के लिए रात के। आई हैव डिनर एट 7 o'clock, मैं 7 बजे रात का खाना खाता हूँ। यस। वेल व्हाट डू यू डू आफ्टर डिनर? फिर उसके बाद क्या करते हो? आई रीड और वॉच, मैं पढ़ता हूँ और टीवी देखता हूँ, वॉच टीवी। आई टेक अ बाथ एट 9:30, फिर मैं 9:30 बजे मतलब कपड़े चेंज करता हूँ। एंड आई गो टू बेड एट 10, फिर मैं सो जाता हूँ। आई गो टू बेड एट 10, मैं 10 बजे सोता हूँ। You certainly have a busy and interesting life, Mr. Ali. Thank you. You're welcome. This is role play. I'm just telling you. So आप इस तरह भी रोल प्ले अपने एक मतलब बना के इसके ऊपर कन्वर्सेशन इस तरह कर सकते हैं. You can do it. So next. Now we are learning about present continuous tense and present also called progressive tense. And this tense shows that something is continuing now. This tense doesn't tell when something started. कहता है ये टेंस जाहिर करता है कोई काम जारी है, लेकिन ये नहीं बताता कि कब से जारी है. सो ये सही है, आपको क्लियरली सारा कुछ लिखा है. easily to I have written to easily to understand. तो ये टेंस जाहिर करता है कि कोई काम जारी है, लेकिन ये नहीं बताता कि कब से जारी है. तो when that something is continued, जैसा मैं अभी आपको टीच कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू. सो इसी तरह माई मदर इज़ कुकिंग इन किचन, मेरी अम्मी खाना पका रही हैं. तो जो चीज़ जारी होता है उसके लिए हम कंटिन्यूस यूज़ करते हैं. द डिपेंड ऑफ द वर्किंग लाइफ. अब आप जैसे पानी पी रहे हैं तो हम बोलेंगे, अगर मैं पानी पी रहा हूँ मिसाल के ऊपर, आई एम ड्रिंकिंग वाटर. जब वो काम उसी वक्त हो रहा है, कंटिन्यू है. अगर आप बैठे हैं मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो हम बोलेंगे आई एम यूजिंग या यू आर यूजिंग सेल फोन नाउ. आप अभी सेल फोन यूज़ कर रहे हैं. तो आई थिंक तो दिस फार्मूला सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, एम वी यूज फॉर आई, ओके जस्ट यूज फॉर आई, एंड द फ्रेंड इज एम आई, इज आर इसके ऊपर और मजीद में we can't understand because you have learned how to use in be verbs which subject and which subject. So m is our, m we use for just I, is he, she, at any one name, and this, that, and are we use for they, we, are, you. Verb plus ing, but here is fourth form of the ing we use in verb का. अब यहाँ पर हमें verb का चौथा फॉर्म यूज करना है, वो वर्ब विल ing. जैसे गो तो गोइंग हम बोलेंगे, गेट गेटिंग, कट कटिंग, राइट राइसिंग, कैरी कैरिंग, वॉच वॉचिंग, बाय बाइंग, लाइक दिस. सो द फर्स्ट सेंटेंस आई हैव रिटन, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, इसमें परिंदे आसमान में उड़ रहे हैं. आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ. My father is reading a newspaper, मेरे वालिद अखबार पढ़ रहे हैं. We are waiting for them, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं.
हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। Your elder brother is talking to someone on the mobile phone. Your elder brother is talking to someone on the mobile phone. आपके बड़े भाई मोबाइल फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं। Everybody is using mobile phones these days, या nowadays also called nowadays या these days। आजकल हर एक मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है। Everybody is using mobile phones these days, it's mean आजकल हर एक मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है। It is raining in सक्कर now, अभी सक्कर में बारिश हो रही है। You are paying attention to your studies, आप अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। He is having a breakfast, वो नाश्ता कर रहा है। I'm taking an exam tomorrow, मैं कल एक इम्तिहान दे रहा हूँ। So these are present continuous tense we learning about, and this is all sentence affirmative, and you use in your own self. I told you this is different sentence, but easier than it's a different than. So ये वो जुमले हैं जो हम माहौल में इस्तेमाल, जैसे आजकल हर एक मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है। तो एवरीबडी इज़ यूजिंग मोबाइल फ़ोन दीज डेज। पहले हम बोलते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, तो मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो व्हेन विथ समथिंग इज गोइंग, तो वी कॉल आई एम गोइंग टू। सो आई हैव यू आल्सो अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट, एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। Negative sentences इनका भी जुमला पैटर्न सब्जेक्ट प्लस MR is not, now be, after be verb we use not, then verb ing plus object। She is not talking to me, वो मुझसे बात नहीं कर रही है। I'm not hiding anything from you, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। My younger sister is courting me, courting me, मेरी छोटी बहन मुझसे लड़ रही है। His friend is cheating him, उसका दोस्त उसे धोखा दे रहा है। I'm not having a rest now, मैं अभी आराम नहीं कर रहा हूँ। So these are negative sentences to easily to understand these sentences. Next, simple interrogative sentences. Now we are सवालिया जुमले। The first use be verb is MR plus subject plus verb ing plus object। Are you laughing at me? क्या आप मुझ पर हंस रहे हैं? Is his toothache? Is his toothache? क्या उसके दांत में दर्द हो रहा है? Are you going there? क्या तुम वहां जा रहे हो? Is it raining outside? क्या बाहर बारिश हो रही है? Are you waiting for your result? क्या आप अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं? So these are interrogative sentences. The first use when we talk about, when we write about is, we can't use you. We use is, we use for he, she, it, anyone name. Am used for I. Am I going to school? क्या मैं, your own self making sentence, your own self talking about am I. Are we use for the, they, you, we. So are you going there? Like this. So these are interrogative sentence, present continuous. Next, and real interrogative sentence, an I.W. question also. Why is he shouting at you? Why is he shouting at you? वो आप पर क्यों चिल्ला रहा है? Who is knocking at the door? दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है? What are you doing at home? आप घर पर क्या कर रहे हैं? Where are you coming from? आप कहाँ से आ रहे हैं? How is he feeling? वो कैसा महसूस कर रहा है? वो कैसा महसूस कर रहा है? So these are interrogative sentence. First come I.W. question, then be verb, then subject, then verb ing, then object here. So I hope you are enjoying today this class. Yeah, if you have a question, you will be asked in comment it and message. I will reply and that message you. Next, now we use present perfect tense. Present perfect tense, this is third form of the tense. This is kinds
जैसे before we learn present simple tense, then we learn present continuous tense, now we third one present perfect tense. And definition, we use this tense to show an action which happened in the past but with a result up to now. Or we use duration from the past till now. Some adverbs and passives used with this tense are already, ever, never, just, yet, this morning, week. ये टेंस जाहिर करता है कि कोई काम माजी में हुआ है मगर इसका असर अब तक मौजूद है, इसमें फॉर और सिंस का इस्तेमाल होता है. सही. आई हैव रिटन ईजी टू अंडरस्टैंड कि जो काम पास्ट में होके अब यहाँ पर फिनिश होता है. जैसे आप काम कर रही थी, अब वो कुछ देर के बाद आपने कर लिया, तो आप बोले आई हैव डन माई वर्क, आई हैव कट वेजिटेबल्स. तो आई हैव के साथ आपने उस जुमले को यूज़ करना है. तो हियर इज सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट. अब यहाँ पर वर्ब का हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे. आई कांट रिटन हियर, सो यू रिटन आल्सो यू नॉट. तो थर्ड फॉर्म वर्ब यूज़ करेंगे. सो हाउ टू मेक सेंटेंस लाइक दिस. Affirmative sentence present perfect tense. I have been to London twice. I have been to London twice. मैं 2 दफ़ा लंदन गया हूँ. ओके, हियर इज एक और कॉन्सेप्ट है जो नोट करवाना चाहता हूँ आपसे. आई एम टेलिंग यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट व्हेन वी यूज बिन एंड गॉन. सम इज ट्रू. If I have a time, I will tell all the some been and gone. There are two verbs, क्योंकि been और gone. यहाँ पर been जब हम यूज़ करते हैं जब वो जगह से होके हम आते हैं. So, जैसे आप मार्केट से होके आ गए, आप बोलेंगे I have been to market. I have been to market. मैं मार्केट जाके आ चुका हूँ. अगर कोई बंदा या बंदी जाके मतलब अभी तक गया है, मिसाल के तौर पर आपके अब्बू ऑफिस में गए हैं, तो आप पूछेंगे वेयर हैज़ माई फादर गॉन. अब यहाँ पर गॉन लगाएंगे, बिन नहीं लगाएंगे, क्योंकि बिन जहाँ जब यूज़ करेंगे जब कोई बंदा जाके कोई भी कंट्री या कोई भी जगह से होके आ जाता है, ये दुकान से होके आ जाता है, घर से, तो हम ये इस तरह बोलेंगे आई हैव बिन टू शॉप. मैं दुकान से होके आ चुका हूँ. अगर कोई बंदा अभी तक गया, अभी तक आए, तो इसके लिए ही हैज़ गॉन आउटसाइड. वो बाहर जा चुका है. आके तो बिन लगेगा, आई हैव बिन. अच्छा, अपने लिए गॉन नहीं लगता, आई हैव गॉन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम अपने लिए नहीं यूज़ करेंगे. हम थर्ड पर्सन सिंगुलर ही या शी या ली या साइमा इस तरह, मतलब ही हैज़ गॉन, शी हैज़ गॉन आउटसाइड, वो उस तरफ गई, जा चुकी है. तो इस तरह, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है बिन और गॉन का. यहाँ पर मैंने राइट नहीं तो वर्बली आपको ने नोट करवाया कि बिन और गॉन में डिफरेंट है. सम बिन जब यूज़ करते हैं जब कोई बंदा जाके आ चुका होगा, उसके लिए यूज़ करेंगे. और गॉन अभी तक बंदा गया हुआ, अभी तक आया नहीं, तो उसके लिए गॉन यूज़ करेंगे. ही इज़ गॉन. सो आई हैव बिन टू लंदन ट्वाइस. मैं 2 दफ़ा लंदन गया हूँ. यू हैव मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक इन इट. आपने इसमें बहुत गलतियाँ की हैं, तो बहुत सारी गलतियाँ की हैं. वी हैव सीन दैम दिस मॉर्निंग. तो हेयर यूज इन मेक. तो सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कुछ वर्ब के सेम होते हैं, उसके ऊपर भी इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव और इर्रेगुलर रेगुलर वर्ब क्या होते हैं, उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह एक क्लास अटेंड, अगर वी हैव अ टाइम सो वी विल टेक दैट क्लास, क्योंकि रूल बहुत लंबे हैं, बहुत सारे इंट्रांजिटिव वर्ब वगैरह हैं. तो वो भी इंशाल्लाह हम, ताकि टाइम शॉर्टेज है, लेकिन कोशिश करते हैं टू ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स, रूल एंड रेगुलेशन, हाउ टू, इंग्लिश में क्या क्या रूल होते हैं लिखने के, राइटिंग के. सो यू हैव मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक इन इट. वी हैव सीन दैम दिस मॉर्निंग. हमने आज सुबह उन्हें देखा है. अच्छा, ही हैज़ जस्ट गॉन आउट. मैं यहाँ पर बात वही कर रहा था, वो अभी बाहर गया है, तो ही हैज़ जस्ट गॉन आउट. अब यहाँ देखो, ये बंदा अभी तक आया नहीं है, गया हुआ है, तो जब जाके आएगी तो हम बोलेंगे ही हैज़ बिन टू आउट. वो जाके अगर मैं गया हूँ वापस आके बोलूँगा आई हैव बिन
to outside. So he has just gone out. वो अभी बाहर गया है. They have lost the match. वो मैच हार गए हैं. वो मैच हार गए हैं. Smoking has ruined his health. तंबाकू नोशी ने उसकी सेहत खराब कर दी है. She has had lunch. उसने दोपहर का खाना खा लिया है. My friend has bought a new computer. मेरे दोस्त ने नया कंप्यूटर ख़रीदा है. सिद्रा has learned German. सिद्रा ने जर्मन सीख चुकी है. The milk has gone bad. दूध खराब हो गया है. The milk has gone bad. So these are affirmative sentences about present perfect tense. So with here we use third persons, third form of the verb. जैसा कि gone, went, gone. तो ये हम जैसे make, made, कुछ कट irregular, regular की बात यहाँ पर. तो lost, live, left like this. So next, in negative sentences, pattern subject plus have plus not plus third form verb plus object. I have never been to his home. मैं कभी इसके घर नहीं गया हूँ. I have not talked to her yet. मैंने अभी इससे बात नहीं की है. अच्छा, yet अब तक, ओके, ने अभी इससे बात नहीं की है. They have made a change in the program. उन्होंने प्रोग्राम में तब्दीली कर दी है. I have forgotten his name. मैं उसका नाम भूल चुका हूँ. He has not taken his parents' advice. उसने अपने वालिदैन की नसीहत नहीं मानी है. So अब कुछ भी I haven't eaten lunch. मैंने अभी तक खाना नहीं खा लिया है. तो चुका हूँ, खा लिया है. These गया हूँ. तो these are उर्दू come in the end of the sentence in उर्दू. So ये भी चुका, चुके हो. तो इस तरह भी जुमले डिपेंड करता है आपके जुमले पर और सेंटेंस पर. So this is negative sentence. Now the simple interrogative sentence, pattern subject plus have plus not plus verb plus object. तो have you ever meet her? क्या आप इससे कभी मिले हैं? अच्छा, not come first subject, after the subject I have written some mistakes here. So लिखाई में कुछ हो चुका है. तो पहले है वो हैज आएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा. तो इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं बाय मिस्टेक राइटिंग में. सो यू रिमेंबर नॉट इट, हैव, हैज फर्स्ट कम देन सब्जेक्ट. क्या आप उससे कभी मिले हैं? हैव यू एवर मीट, एवर माने कभी. हैव यू एवर मीट हर? हैज शी फॉरगेटन ऑल? वो सब भूल गई है. हैव दे गॉट एंग्री विद यू? क्या वो आपसे नाराज़ हो गई है. हैज शी फिनिश्ड हर होमवर्क? क्या उसने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है. हैव फातिमा इन आमना बिकम अ फ्रेंड? क्या फातिमा और आमना दोस्त बन गए हैं. सो दीज आर सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. नेक्स्ट, रियल इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड I.W. क्वेश्चन. पैटर्न I.W. plus have has plus subject plus verb plus object, third form of the verb. Okay, what has happened to you? आपको क्या हो गया है. why he rejected your offer? उसने आपकी पेशकश क्यों टकरा दी है. where has he gone? वो कहाँ चला गया है. how is it happening? ये कैसे हुआ है. which school have you selected? अच्छा, elected या selected, आपने कौन सा स्कूल मुंतखब किया है. So these are I.W. question and practice your sentence on style sentences. The structure like this: I.W. question first come, then the have has, then third person verb, then object. So this is the making sentence with real interrogative sentence. So today all the sentence we learned here. So remember. Next, present perfect continuous tense. So here we use for present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. We use this tense show the duration of something. It shows an action which started in the past and is continuing till now. We use for to show an indefinite time
We use this tense to show the duration of something. It shows an action which started in the past and is continuing till now. We use for to show an indefinite time, an hour, 2 days, 3 weeks, 5 years, a long, short, some time. So ये टेंस ज़ाहिर करता है कि कोई काम माजी में शुरू हुआ और अभी तक जारी है. इसमें for और since इस्तेमाल होता है. Since which is you know about sun के हवाले से, for period of the time उसमें s की इजाफा हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं. पैटर्न सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस बिन प्लस वर्ब ing यहाँ पर फोर्थ फॉर्म पर यूज़ होता है. Next, affirmative sentences, present perfect continuous tense, last of the sentences, present simple tense, present continuous tense, present perfect tense. Now we learn last of the present perfect continuous tense. So it has been releasing since morning. सुबह से बूंदाबांदी हो रही है. इसमें बूंदाबांदी बारिश जब थोड़ी थोड़ी होती है तो उसको हम कहते हैं बूंदाबांदी. तो ड्रिलीजिंग कहते हैं. इट हैज़ बिन रिलीजिंग सिंस मॉर्निंग. सुबह से बूंदाबांदी हो रही है. आई हैव बिन रनिंग टेम्परेचर सिंस लास्ट वीक. मुझे पिछले हफ्ते से बुखार हो रहा है. I have been running temperatures. So here is something different. You have been sleeping for 8 hours. आप 8 घंटे से सो रही हैं. My elder sister has been dyeing her hair for 2 years. मेरी बड़ी बहन 2 साल से अपने बालों को रंग रही है. We have been living in this flat since 2002. हम 2002 से इस फ्लैट में रह रहे हैं. She has been working here for a long time. वो यहाँ बहुत अरसे से काम कर रही है. They have been standing there for 15 minutes. वो 15 मिनट से वहाँ खड़े हुए हैं. It has been raining since 9 o'clock. 9 बजे से बारिश हो रही है. My uncle has been teaching maths for 10 years. मेरे अंकल 10 साल से रियाजी पढ़ा रहे हैं. I have been playing the flute for several years. Flute मैं कई सालों से बांसुरी बजा रहा हूँ. Flute several years. So here these are sentence present perfect tense, present perfect continuous tense, which is we are. सुबह से कोई भी काम सुबह से हो रहा है. जैसे हम बोलते हैं I have been, it has been third person singular. तो I have been using cell phone for 2 hours. मैं 2 घंटे से मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ. So you are on self sentence practice in your own self. इसी तरह He has been walking on the road for 3 hours. वो 3 घंटे से चल रही है या चल रहा है. सेंटेंस तो ये like this. Negative sentences. Subject plus have plus not, been, verb plus ing plus object. The wind has not been blowing for a week. एक हफ्ते से हवा नहीं चल रही है. I have not been preparing for my exams for a month. मैं 1 महीने से अपने इम्तिहानों की तैयारी नहीं कर रहा हूँ. He has not been going to school due to jaundice for 2 weeks. Jaundice वो यरकान की वजह से 2 हफ्ते से स्कूल नहीं जा रहा है. It's a kind of illness, बीमारी. He has not been watching TV since morning. वो सुबह से टीवी नहीं देख रहा है. My friend has not been playing any sport since 2004. मेरा दोस्त 2004 से कोई खेल नहीं खेल रहा है. So these are negative sentences. So prepare yourself. Memorize these sentences in your own sentences. Next, simple interrogative sentences. Simple interrogative sentences. Pattern have, has plus subject plus been plus verb ing plus object.
हैज़ ही बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, क्या उसे कल रात से बुखार आ रहा है। हैव यू बिन वॉचिंग टीवी फॉर 4 hours, क्या आप 4 घंटे से टीवी देख रहे हैं। हैव यू बिन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस चाइल्डहुड, क्या आप बचपन से वर्जिश कर रहे हैं। हैज़ हिज सिस्टर बिन क्राइंग फॉर एन हावर, क्या उसकी बहन 1 घंटे से रो रही है। हैज़ हर मदर बिन स्टेइंग एट हॉस्पिटल विद हर फॉर 2 days, क्या उसकी अम्मी 2 दिन से इसके साथ अस्पताल में ठहरी हुई है। स्टे, हैज़ हर मदर बिन स्टेइंग एट हॉस्पिटल विद हर फॉर 2 days, क्या उसकी अम्मी 2 दिन से इसके साथ अस्पताल में ठहरी हुई है। सो दीज आर सिंपल इंट्रोगेटिव्स जिसमें इनकारिया और सवालिया जुमला कंफर्मिंग क्वेश्चंस। Last but not least, ever since beginning, well interrogative since an I.W. question. Last but not least, an I.W. question have, has plus subject plus been, verb plus ing plus object. How long have you been wearing glasses? आप कब से चश्मा पहन रहे हैं। Where have you been stay for a week? Where have you been stay for a week? Staying for a week, आप एक हफ्ते से कहाँ ठहरे हुए हैं। Why has he not been coming to your home for some time? वो आपके घर कुछ अरसे से क्यों नहीं आ रहा है। What has he been doing for our years? वो 4 साल से क्या कर रहा है। What has been happening here since last week? पिछले हफ्ते से यहाँ क्या हो रहा है। So these are I.W. question. I told you there are 3 tenses. So today we learn. So again I repeat it. First slide for the tenses. So today we have learned all the present tense. अब हमने सब हाल के हवाले से जो भी tenses थे वो आपके I have learned. I have made a sentence. I have read it all the sentences. Maybe you enjoy today classes, fantastic classes. Maybe something you have learned and tenses, how to make a tenses, how to make a tense, जुमले कैसे बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। अब प्रेजेंट सिंपल में मज़ीद आपको इम्प्रूविंग करनी है अपनी क्या कहते हैं स्पीकिंग। सो यू प्रैक्टिस फर्स्ट राइट jot down one paragraph or one sentence like this. I'm telling you, I go to school, I go to school, I don't go to school, do you go to school. अब you go to school, you don't go to school, do you go to school. They go to school, they do not go to school, do they go to school. We, अब आप चेंज भी कर सकते, we go to college, we don't go to college, do we go to college. अब इसकी प्रैक्टिस आप वर्बली योर टंग इज कमिंग आउट सम सेंटेंस यू विल बी परफेक्ट इफ यू रीड इन अगेन इन रीडिंग इज इम्पोर्टेंट एंड द माउथ इज रनिंग व्हेन यू प्रैक्टिस समथिंग। इजली वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह। अब जैसे ये लिखा गुड चिल्ड्रन ओबे देयर पेरेंट्स, गुड चिल्ड्रन डिड नॉट ओबे द पेरेंट्स। डज गुड चिल्ड्रन ओबे देयर पेरेंट्स, बिकॉज द थर्ड पर्सन गुड चिल्ड्रन थर्ड पर्सन। तो इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे सिंपल जुमले में। पहले आप जुमला प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो सिंपल में भी कहते हैं ही ड्रिंक्स टी, ही डजंट ड्रिंक टी, डज ही ड्रिंक टी। शी ड्रिंक्स सीरप, शी डजंट ड्रिंक सीरप, डज शी ड्रिंक सीरप। तो इस तरह सिंपल दे ईट बिटल नट, दे डोंट ईट बिटल नट, डू दे ईट बिटल नट। इसी तरह Ali eats bitter leaf. Ali doesn't eat bitter leaf. Does Ali eat bitter leaf? Bitter nut and bitter leaf. Bitter leaf पान को कहते हैं और bitter nut चालिया, these kind of we call. So practice is most important. आप practice जितना करेंगे आपके टंग जो है ना कंटिन्यू चलता जाएगा। विदाउट प्रैक्टिस जस्ट आप रिटर्न करेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल if you don't have a partner, you stand with mirror in front of mirror practice. क्योंकि अगर आपके पास घर पे पार्टनर नहीं है तो आप आईने के सामने
तो लोग आपसे कहेंगे कि he will be he is gonna mad. So अब इन आपको बुरे भी क्या कहते हैं कमेंट्स पास हो सकते हैं, लेकिन practice is no shy because of the actor actress they do first, then will become do our act. पहले वो मतलब करते हैं, सामने कैसे मैं लग रहा हूँ तो उसके सामने करते हैं, तो फिर जाके वो क्लियर चीज़ होता है। तो आप भी प्रैक्टिस करें प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। So these are, today we have learned all the present about. आज हमने पढ़ा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के हवाले से भी पढ़ेंगे कि पास्ट में कैसे, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी के साथ अपने टीचर अब्दुल मुईद मोहसिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।